Hi guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, this video is a review video wherein, as promised, I am going to do a review of this Good Vibes Red Clay Powder. So if you guys are interested in watching the video, then let's get quickly into the video. So guys, I am going to do a review of Good Vibes Red Clay Powder. So I have purchased this red clay powder from I Heart Beauty sale of Purplle. This product is red in color और ये powder type का product है. जैसे और भी क्ले मास्क होते हैं वो नॉर्मल से मास्क होते हैं wherein you can apply directly on your face, but ये पाउडर है, इसको आपको एक पेस्ट पे बनाना होगा, then only you can use the product. So guys, if I talk about the bottle, this has red clay powder in it which is red in color, and this bottle contains 40 gram of the product which costed me for around 80 to 85 rupees. I got it on discount, wherein इस बॉटल पे जो MRP लिखी है वो है 115 rupees, and if I go through the bottle I can see that this product has no parabens, no sulfate, and it is cruelty free like all other Good Vibes product, which means it is not being tested on animals. Guys, if I go through the instructions of this bottle, it is written that it's multi-purpose use powder, can be used for both hair and skin, packs, and excellent exfoliator. Red clay naturally detoxes your hair by removing dirt and impurities hidden in your hair follicles. It also brightens complexion while reducing the redness and discomfort caused by irritation. So guys, it is for all skin types and can be used on all types of skin and hairs. So it is basically used for removing dirt and impurities from your skin as well as from your hair follicles. And as you guys know, it is a clay powder, so it also helps in reducing the oil production on your skin as well as on your scalp. Now coming to the direction of the usage. So for skin, for dry skin, mix the powder with curd, and for normal to oily skin, mix with rose water. Apply the face mask evenly across clean face and rinse it off after 10 to 15 minutes with lukewarm water. And for hairs, mix with water to form a thick paste and apply the hair mask from the root to the tip of your hair. Leave it on for an hour and wash it off with shampoo and conditioner. So these are the direction of use. अगर मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, so I'll be using it with rose water, या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी यूज कर सकते हो. And if your skin type is dry, so आप इसको कर्ड के साथ भी यूज कर सकते हो. Guys, that was all about the instructions, और जो बॉटल पे मेंशन था वो सारी चीजें मैं आपको रीड करके बता दी है. So let's get into the process of application. So guys, for application all you need is this Good Vibes red clay powder and a bowl wherein you can mix this red clay powder, and a brush to apply this powder. It is not mandatory, you can even use your finger and apply this powder on your face. And if your skin is oily, you need this rose water, and if your skin is dry, then you can use curd to apply the powder. So I'm taking a very less quantity of this powder in this bowl. Almost एक spoon के बराबर मैंने इसको ले लूँगी. Then I'll be taking my rose water और मैं इसको इसमें डाल लूँगी. आप normal water भी use कर सकते हो. I'll be mixing this.
So guys, our pack is all ready. So before applying this, let me tell you, आप कोई भी मास्क अप्लाई करो, you should wash your face. जब भी आपका face clean होगा, then only you should apply the mask. I have used this Pond's Pure White Anti-Pollution Plus Purity Face Wash और अब मैं अपना face mask जो है अप्लाई करूँगी. Guys, 1 spoon is sufficient to apply on your face and neck area. So you can see my bowl, it is all empty now. So बहुत ही थोड़ी सी quantity use करने पे आपके पूरे face पे ये mask लग जाएगा. And you have to keep this for 15 minutes. So I'll see you guys in 15 minutes. तब तक आप बीच में कुछ भी कर सकते हो, अपनी नॉवल पढ़ सकते हो, यू कैन वॉच टीवी, यू कैन यूज योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट एवर यू फील लाइक. आप कुछ भी करो बट लेट इट सेट फॉर 15 मिनट्स and yeah, that's it. So I'll see you guys in 15 minutes. So guys, as you can see, I have washed my face. 15 minutes हो गए थे और मेरा पैक जो है वो completely dry हो गया था. I have washed my face normal water से मैंने wash कर लिया है and my skin feels so soft and clean. बहुत ही अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट आ रहा है मेरे फेस पे और बहुत ही क्लीन सा मेरा फेस फील हो रहा है. सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. मैंने आज अप्लाई करने से भी पहले मैं लास्ट 15 डेज से इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ और मुझे इससे कोई भी इरिटेशन और या कोई रिएक्शन नहीं हुआ है. सो आई थिंक मेरी स्किन ऑयली है, सो आई थिंक फॉर ऑयली स्किन इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. एज यू ऑल नो कि क्ले मास्क आर वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन क्योंकि ये आपके ऑयल को कंट्रोल करते हैं, सेबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. सो आई रिकमेंड यू गाइज, यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट. गाइज, क्ले मास्क यूज़ करने से थोड़ी ड्राइनेस फील होने लगती है फेस पे क्योंकि ये आपके ऑयल को पूरा क्लीन कर देता है. सो I'll now go with my skincare routine. So I am going to use this Good Vibes Rose Toner और मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी. So after applying the toner, you have to pat it so that it gets penetrated in your skin, and I'll give this 2 minutes to just get absorbed into my skin and then I'll see you guys. After my toner, I am going to use this Good Vibes Rose Hip Serum that is very good for glowing skin. So I'll take 2 drops of this product और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे. So guys, now for my moisturizer, I am going to use this Biotique Morning Nectar cream. So guys, I have taken a very less quantity of this product और मैं अच्छे से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी. So now I'll end my skincare with this lip balm क्योंकि आपके फेस के साथ साथ आपके लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ. सो फॉर मॉइस्चराइजिंग माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस वैसलीन पेट्रोलियम जेली.
yeah guys, that was it about this video. I hope this video was helpful for you guys. आप इस रिव्यू वीडियो को देख करके फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस प्रोडक्ट को लेना है कि नहीं लेना है. सो आई होप कि मैंने आप लोगों की हेल्प की होगी इस प्रोडक्ट को अच्छे से आप तक रिव्यू पहुंचाने में. सो या दैट वाज इट. सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, काढ़ा पीते रहो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.